हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप लोगों को क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस ऑल चैप्टर से एमसीक्यू और एससीक्यू क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर 1 से देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोपोनेंट्स ऑफ नेचुरल राइट्स थ्योरी आर। आंसर होगा लॉक। क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉलिटिकल साइंस इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव साइंस। तो इसका आंसर जो होगा वो है ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फादर ऑफ लिबरलिज्म वाज। आंसर होगा लॉक। नेक्स्ट है, द वर्ड पॉलिटिक्स कम्स फ्रॉम विच वर्ड। आंसर होगा पोलिस। टू टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिस्कशन आर। आंसर होगा इसका स्टेट एंड गवर्नमेंट। द स्टेटिस्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज गिवन बाय। आंसर होगा गार्नर। इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस। तो इसका आंसर होगा 1945। द बुक द पॉलिटिकल सिस्टम वाज रिटन बाय। आंसर होगा डेविड एस्टन। पॉलिटिकल साइंस इट्स बिगिनिंग एंड एंड विद द स्टेट सेड बाय। आंसर होगा गार्नर। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द स्टेट मेड द स्टेटमेंट। आंसर होगा कैटल। नेक्स्ट है, द फादर ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी वाज। आंसर होगा लॉक। द ओरिजिनेटर ऑफ लीगल सॉवरेनिटी इज। आंसर होगा हॉब्स। He was favor of calling political science a science. आंसर होगा एरिस्टोटल। Who wrote the book Public Opinion? आंसर होगा लिपमैन। Who is the father of modern political philosophy? आंसर होगा मैकावली। Man is political organism who made the statement? आंसर होगा एरिस्टोटल। The author of the book अर्थशास्त्र is। आंसर होगा कौटिल्य। Politics is a universal activity. Who said? आंसर होगा एलन बॉल। पॉलिटिकल साइंस इज कॉल्ड द बेस्ट साइंस। किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट फोर्स द विल ऑफ पीपल इज द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट मेड द स्टेटमेंट। आंसर होगा बी नंबर टी.एच. ग्रीन। द टर्म पॉलिटिकल साइंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। आंसर होगा लेविंज। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ ए मेडिवल पॉलिटिकल थिंकर इज। आंसर होगा मार्क्स। The name of an ancient Roman statesman is। आंसर होगा पोलिबस। The author of the book Republic is। आंसर होगा प्लेटो। Name to ancient city state। आंसर होगा स्पार्टा एंड एथेंस। What is civitas? आंसर होगा ancient Roman philosopher used the word civitas to mean state। Who is the author of the book The Prince? इसका आंसर होगा गुरु निकोलो मैकियावेली। नेम द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टेट। आंसर होगा डेफिनेटरी एंड सॉवरेनिटी। नेक्स्ट है, हु अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द टेरिtorial sovereignty ऑफ द स्टेट। आंसर होगा ब्लंटली एंड गेटल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉवरेनिटी। आंसर होगा द वर्ड सॉवरेनिटी मीन्स द अल्टीमेट एंड अनचैलेंज्ड पावर ऑफ द स्टेट। हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द प्रिंसिपल पीपल सॉवरेनिटी। आंसर होगा जैकस रूसो वाज द प्रोपोनेंट ऑफ the principle of sovereignty of the people. What is the most ancient theory about the origin of the state? Answer होगा the most ancient doctrine about the origin of the state is divine doctrine. The state is the result of continuous development of human society. Whose quote? Answer होगा Burgess. Name two proponents of social contract theory. Answer होगा John Locke and Jacques Rousseau. Name one of the proponent of doctrine of coercion. आंसर होगा लीकॉक वाज द प्रोपोनेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कोर्सियन। व्हाट इज द गवर्नमेंट। आंसर होगा अकॉर्डिंग टू गार्नर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इज द गवर्नमेंट थ्रू विच द स्टेट इम्प्लीमेंट्स इट्स विशेस। राइट टू सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट। आंसर होगा सस्टेनेबिलिटी एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। व्हाट इज द एसेंस ऑफ माइट इज राइट थ्योरी। आंसर होगा माइट इज राइट इज द एसेंस ऑफ द थ्योरी of force. From which word does the word state come? State is from the Latin word status. Okay. What is the name of St. Augustine's treatise on the state? Answer is City of God. Who believes in the theory of contribution to the state? Marxists believe in the contribution theory of the state. Who calls the natural state the heaven of mortals? Answer is Rousseau. Who is the author of two treatises on civil government? आंसर होगा लॉक। Who is called an artificial institution? आंसर होगा the state.
Contractualism emphasizes the two democratic ideals of justice and freedom. Who is the proponent of the quote? Answer होगा Barker. Society is federal by nature. Who is responsible? Answer होगा Lasky. I am the state. Who said? Answer होगा Emperor Louis XIV. What dynasty was James the first king? Answer होगा Stuart family of England. The other attribute that is imposed on the state is stability. Who made the statement? Answer होगा Gardner. Next, a government is an organization or an instrument of the state. Who made the statement? Answer होगा Walter Gatell. Where was the Glorious Revolution organized? Answer होगा in England. Kings are the human reflection of God on earth. Who claimed this? Answer होगा James I. Who gave the idealist definition of the state? Answer होगा Kant. The origin of the state before or after the origin of the society? Answer होगा later. Who was the first proponent of the doctrine of force? Answer होगा Heraclitus. Next है name a political scientist who was a contemporary of the French Revolution. इसका आंसर होगा रूसो. इसका चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इज वन. आंसर होगा इमोशनल फीलिंग. इंडियंस आर वन. आंसर होगा कास्ट. नेक्स्ट है नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म बोथ कॉम्प्लीमेंट्री. नेशनलिज्म इज एसेंशियली आंसर होगा क्या इमोशनल. डिस्टॉर्टेड नेशनलिज्म ऑफ इंटरनेशनलिज्म ए नंबर एनिमी. नेक्स्ट है फैसिस्ट और नाजिस एम्फेसाइज मोर. आंसर होगा वन हेरिटरी यूनिटी. नेक्स्ट है द वर्ड नेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. आंसर होगा नेसियो. ए नेशनल सोसाइटी इज कॉल्ड अ सोसाइटी विथ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. आंसर होगा SHJS मैचिंग. नेक्स्ट है कॉल्ड इंटरनेशनल पावर द ड्रीम ऑफ द पास्ट. हु कॉल्ड? आंसर होगा मसोलिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ नेशनल पब्लिक सोसाइटी इज एसेंशियली आइडियोलॉजिकल. द स्टेटमेंट. आंसर होगा डी नंबर रिनर. कॉल्ड नेशनलिज्म द बैन ऑफ ह्यूमन लाइफ. आंसर होगा मालिनोस्की. द मेन कंपोनेंट ऑफ नेशन आर. आंसर होगा पॉलिटिकल अवेयरनेस. द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज फुलफिल्ड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ईच नेशनल सोसाइटी हैज़ इट्स ओन. आंसर होगा स्टेट. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइट्स अ डिवाइडेड नेशन. आंसर होगा नेशनलिज्म. कॉल नेशनलिज्म अ ह्यूमन मैडनेस. आंसर होगा एरिक फ्रोम. अ नेशन इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड फ्री और इमेंसिपेटेड सोसाइटी इन ऑल इट्स फॉर्म फ्रॉम एक्सटर्नल रूल. आंसर होगा कास्ट. इसका चैप्टर 4 जस्टिस इस्टेब्लिशेस. आंसर होगा एक्ट. इक्वलिटी एंड फ्रीडम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉम्प्लीमेंट्री. ओके. सबसिडियरी ऑथोराइट एक्सरसाइज. आंसर होगा बी एक्ट. डिस्क्राइब इक्वलिटी एंड लाइबर्टी एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. आंसर होगा जॉन स्टुअर्ट मिल. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस सेड द स्टेटमेंट. आंसर होगा हैरोल्ड लेस्की ए नंबर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस इज अ सोशल रियलिटी. हु सेड? आंसर होगा बार्कर. राइट्स डिड नॉट पेडिमेंट इन द डेफिनिंग फ्रीडम. आंसर होगा हॉबिस. इक्वलिटी अंडर द लॉ हैज़ बीन सेक्यूर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आंसर होगा A14. ही कंसिडर्ड डेमोक्रेसी टू बी द डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ फ्रीडम. आंसर होगा लेकी. ही इज़ द ऑथर ऑफ सिटी ऑफ द सन. आंसर होगा कैम्पेनिला. द ऑथर ऑफ ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इज. आंसर होगा हैरोल्ड लेस्की. व्यूड स्टेट लॉ एज इम्पर्सनल. आंसर होगा हेजल. द फ्रीडम दैट आइडियलिस्ट थिंकर्स गेव मोर इम्पोर्टेंस टू इज. आंसर होगा डी मॉरल फ्रीडम. प्रोपोनेंट्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लाइबिलिटी आर. आंसर होगा रूसो. क्रिटिसाइज द नेचुरल इनइक्वालिटी थ्योरी. आंसर होगा स्टोइक फिलोसोफर. फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नेशंस सेड. आंसर होगा जॉन मिल्टन. द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक इज. आंसर होगा एरिस्टोटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल रीजन कमेंटेड. आंसर होगा एरिस्टोटल. लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द एलाइट सेड. आंसर होगा वाइसिंस्की. ऑथर ऑफ ओटोपिया. आंसर होगा थॉमस मोर.
The condition of freedom is आंसर होगा ethics. What are the types of laws? आंसर होगा 2 types. Justice is justice says. आंसर होगा बार्कर. Proposed theory of procedural justice. आंसर होगा नॉजिक. Concept of equality is a changing concept says. आंसर होगा बार्कर. He who first distinguishes law from morality. आंसर होगा मैकियावेली. The American War of Independence took place in. आंसर होगा 1776. इसके बाद देखिए चैप्टर 5. क्वेश्चन नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आंसर होगा मेनली रिटन. Elections were held to Constituent Assembly. Answer 1946. The Constituent Assembly first stated the demand. Answer होगा गांधी जी. The Vice President of the Constituent Assembly was. Answer होगा हिरेंद्र कुमार मुखर्जी. The Indian Constitution provides. Answer होगा 12T. Currently there is a list in the Constitution of India. Answer होगा 12T. Directive principles are incorporated in which part of the Constitution? Answer होगा in part 4. The fundamental duties attached to the Constitution are. Answer होगा in part 4. The Indian Constitution enshrines the fundamental duties of citizens. Answer होगा 11T. The permanent president of the Constituent Assembly was. Answer होगा Dr. Rajendra Prasad. The chairman of the Constituent Assembly drafting committee was. Answer होगा बाबा साहेब अम्बेडकर. The rights that foreign nations do not enjoy in India are. Answer होगा political. An Englishman living in India. Answer होगा foreigner. The provisional president of the Constituent Assembly was Sachidananda Singh. Next question है universal adult suffrage is organized. Universal adult suffrage is organized in the Constitution. Answer होगा in section 326 number. The most rigid clause of the Constitution is. Answer होगा 368 number. The preamble of the Constitution of India has been amended to. Answer होगा once. The 11th fundamental duty added to the Constitution is. Answer होगा in the 86th Constitution Amendment. इसका चैप्टर 6. Legislative power in India is divided into several list. Answer होगा 3. Next question है national capital region of India has. Answer होगा A. What is the highest status in the United States? Answer होगा constitution. Number of states in present day in India is. Answer होगा 28. The number of government in United States is. Answer होगा 2. Which type of government is present in India? Answer होगा parliamentary. ये यूनिसेंट्रिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट. आंसर होगा इन इंग्लैंड. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इम्पोजेस फाइनेंशियल एमरजेंसी इन इंडिया. आंसर होगा 360. गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया. आंसर होगा सेमी फेडरल. इन इंडिया द यूनियन कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होम. आंसर होगा नियर द लोअर हाउस. इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन जापान. आंसर होगा पार्लियामेंट्री. Undivided sovereign power is a characteristic of which type of government. Answer होगा concentric. Subject currently included in the central list in India are. Answer होगा 99. In presidential system of government, the president can be deposed by. Answer होगा by the high court system. Not it issued in India. Answer होगा फाइनेंशियल एमरजेंसी अभी तक लागू नहीं किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ रिजाइम इज कॉल्ड न्यू डिक्टेटरशिप. आंसर होगा पार्लियामेंट्री. इसका क्वेश्चन है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज़. आंसर होगा इन इंडिया. आंसर होगा यूएसए. द अमेरिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज. आंसर होगा फेडरल. इसके बाद चैप्टर 7 लास्ट चैप्टर. पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड. आंसर होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. Perspective principles are called instrument of instruction by. आंसर होगा अम्बेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट द नंबर ऑफ. आंसर होगा 5. नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आंसर होगा 11. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइन्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आंसर होगा इन द 3rd पार्ट. तो इस तरह से आप लोग को अगर किसी भी क्लास का सजेशन चाहिए, नोट चाहिए, तो आप लोग मुझे
कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, मैं ज़रूर उस नोट का प्रोवाइड करूँगा।